government is indulging in direct corruption. It is trying to give benefit to its own people at a much higher rate than the contractor at the cost of the taxpayers' money. Full stop. petitioner is concerned, my lord, that is not going to be affected. दो गवर्नमेंट एडवोकेट कब से नहीं, हम इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है my lord, that is not going to be affected. वो समझ में आ रहा है the contract. Then there appears to be no justification in playing with the taxpayers' money. This was given to me by the Civil Supplies Corporation. I am working since 2021. Yes. The period is still subsisting till June 2023, 30th June, and further extendable by another 1 year. This is what my contract says. Now, in the middle of the contract for the entire state of Madhya Pradesh, the state has now floated a scheme, Anna Doot Pariyojana. And they are saying that we want to give employment to unemployed youth. So we will now do away with all the contractors. तब 30 तारीख के बाद ना? नहीं, 30 तारीख के अभी कर दिया है। अंदूत योजना का नोटिस कहाँ है बताइए? ये अभी चालू कर दिया ना। अरे कहाँ है बताइए? ये P3 है, पेज 16 पे है सर। पेज 16 ये तो इमीडिएट इफेक्ट पे आ गया। अरे देखें तो इसके गुलाटी साहब कागज तो देखने दीजिए कोर्ट को। पेज नंबर 16 पेज नंबर 16 में क्या लिखा है? ये लागू कर दिए सर। ये तो 22 का है। हाँ, 21 नवंबर से लागू हो गई है। आपको कैंसिलेशन का नोटिस कब दिया? नहीं, हमें वही तो हमारा नहीं प्रीमेच्योर नहीं है, यही हमारा ग्रीवेंस है। क्या? Myself and all the other hundreds of contractors। नहीं, इनडायरेक्ट कैंसिलेशन हो रहा है ना सर, ये स्कीम लाके कैंसिलेशन। अरे हम PIL में नहीं है। नहीं, PIL नहीं है। आपको यह बताना पड़ेगा कि आपको जानबूझ के काम नहीं दिया जा रहा है, वो बताइए। नहीं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो सिंपली ये बोला है कि आपको जब बुलाया जाएगा काम दे दिया जाएगा, आप करेंगे और उतना आपको क्वांटिफाई करके पेमेंट करा जाएगा। बट दिस स्कीम लॉ इट्स क्लियरली, मैं आपको सिर्फ एक क्लॉज दिखा दूं, हमारा इसमें पर्टिकुलर पेज 18 देखें सर। पेज 18 दिखाइए। मतलब हमको सप्लांट करने के लिए स्कीम आई। नहीं, वो आप देखें ना, उसमें हमारा रेफरेंस है पेज 18 में सर, इंट्रोडक्शन, पृष्ठभूमि, उसी में लिखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 13 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न सामग्री के प्रदाय का प्रावधान है। वर्तमान में इस में द्वार प्रदाय योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदाय केंद्रों से उचित मूल्य दुकान पर खाद्यान्न अन्य सामग्री के परिवहन का कार्य निविदा के माध्यम से नियुक्त परिवहनकर्ताओं से कराया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। टोटल ये 98 कॉन्ट्रैक्टर्स में हम भी शामिल हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा है 1.2 देखें सर, प्रदाय वर्तमान में द्वार प्रदाय योजना पक्ष राशन सामग्री के प्रदाय में निम्नानुसार कठिनाइयां समस्याएं आ रही। परिवहन व्यवस्था ठेकेदारों के हाथों में, अनवायबल दर पर ठेका प्राप्त करना, समय पर सामग्री का परिवहन ना करना और परिवहन में अनियमितता। नाउ काइंडली सी दिस 2 पॉइंट्स। ये कहते हैं अनवायबल दर, इन्होंने इसी स्कीम में दर डिस्क्लोज कर दी है कि हम ये बेरोजगारों को 65 रुपए क्विंटल पे देंगे काम, हमको दे रहे हैं 25 रुपए क्विंटल पे। द टेंडर ऑन विच आई हैव बीन, ये 65 फिक्स कर दिया है सर। ये पेज 21 देखें सर, द मोस्ट सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस स्कीम। जी बताइए क्या लिखा है? इनको 65 रुपए क्विंटल दिया जाएगा। कहाँ लिखा है भाई? ये पेज 21 पैरा क्लॉज 8 में सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न के परिवहन हितग्राहियों को 65 रुपए प्रति क्विंटल के मान से राशि का भुगतान। और हमारा बिड तो देखिए सर, 25 रुपए में हम बिड कर रहे हैं और हम उस पेमेंट उनसे रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पर बोलते हैं बेरोजगारों को काम देंगे। 40 रुपए का अंतर कैसे आ रहा है? उनका एप्रीहेंशन पे पिटीशन है। नहीं, एप्रीहेंशन पे नहीं है। 40 रुपए आप किसको मुनाफा देना चाह रहे हैं 40 रुपए में? इसमें लेक्चर P6 भी है मालूम। ये सिमिलर पिटीशन आइडेंटिकल इंदौर की पूरी पिटीशंस का बंच मैंने फाइल किया, इंटरिम ऑर्डर है उसमें। जो अर्लियर क्वेरी मेड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट कि भाई इस स्कीम से आपको क्या नुकसान हो रहा है मालूम। दैट हैज बीन सब लिखेंगे नहीं, वही तो इंटरिम ऑर्डर आई एम सीकिंग। The contract same order I am this petition is valid up to witness. The new scheme will not is a short-listed contractor who entered into an agreement with Madhya Pradesh Civil Supplies, Food, Civil Supplies and Madhya Pradesh Civil Supplies Corporation, food nahi, full stop. This agreement was executed for transportation of food grains under public distribution system scheme from godowns to different fair price shops. Next para. Petitioner had filled his tender at the rate of rupees 25 250 per metric ton. 250 per metric ton or rupees 25 per quintal.
full stop. Now, with a view to give undue benefit to certain chosen persons, Government of Madhya Pradesh, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department passed order dated 21st November 22, Annexure P3. It proposes to implement Mukhyamantri Yuva Anna Dut Yojana. Full stop. Next paragraph. Reading from this scheme, it is pointed out that in from para 1.1, it is evident that the targeted persons include transporters, which includes petitioner also, who were engaged in transportation of goods to 26,000 fair price shops. Next paragraph. The reason which is given for bringing the scheme is mentioned in para 1.2, full stop. It lists 4 reasons, namely transport arrangement being in the hands of the contractor, contractors receiving contracts at unviable rates, 3, not transporting goods in time, and 4, causing irregularities in the matter of transport. Full stop. Next paragraph. It is pointed out that the rates which have been approved under the Mukhyamantri Andut Yojana, as is evident from para 8 of this scheme, are 65 rupees per quintal, which is more than double than the contracted rate with the petitioner. Full stop. It is submitted that in the name of सर ये तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब उनका ऑब्जेक्ट employment generation, government is indulging in direct corruption. It is trying to give benefit to its own people at a much higher rate than the contractor at the cost of the taxpayers' money. Full stop. It is submitted that under the similar facts and circumstances, interim relief has been passed by Indore bench of this court in WP 1505 of 2023. Next para. Taking all these facts into consideration, that if that there is a provision for dealing with all 4 exigencies mentioned in para 1.2 under the contract agreement executed between Madhya Pradesh Civil Supplies Corporation and the transporters like petitioner, and they could have been addressed against under the provisions of the contract, and there was no need to float another scheme, and that too at exorbitantly high rates, so to give benefit to the chosen few blue-eyed persons of the government, impugned policy is stayed till next date. May I read that? May I submit? हाँ, This policy has force in future. There is no date. इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है मालूम, that is not going नहीं to be affected. वो समझ में आ रहा है. Lord is on a larger this thing, Lord. Let reply be So filed. her They are doing contract away of with petitioner public is tender. concerned, that is not going to be affected. दो गवर्नमेंट एडवोकेट कब से नहीं, हम सिविल सप्लाईज का अच्छा सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के डाल लीजिएगा. Accepted. अच्छा It is for your inefficiency that ऐसा चाहते हैं कि इसमें लिखा ना. इसमें जो इंदौर बेंच का है उसमें यही कहा है कि आपका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. नहीं हम उसमें क्लियर कर देते हैं. फुल स्टॉप. Though Shri G.P. Singh, appearing for the Civil Supplies Corporation, submits that no adverse effect is going to be caused to the petitioner, but the fact is that when the contract is subsisting, it is extendable in terms of the contract by a period of 1 year. Then, without cancelling the contract, assigning proper reasons, this scheme could not have been floated in November 22 to cause dent to the commercial interests of the petitioner. Therefore, the argument put forth by Shri G.P. Singh appears to be fallacious on face of record and is therefore rejected. Let एक निवेदन reply be filed within 4 weeks. नहीं Contract is a period of 2021 to 23 my lord. हाँ ठीक है. उस समय 25 रुपए था. अभी ये क्या उसी रेट में आगे ये ये काम तो नवंबर में आपने नवंबर 22 में 65 रुपए कर दिया. नहीं अभी किया का फोर्स वो बनाया है सर. आगे के लिए किया है. ठीक देखेंगे. फुल स्टॉप. Actually, एक पॉइंट और लिखिएगा. श्री मानस मणि वर्मा submits that the contract was valid only up to June 23.
Therefore, the moot question is that whether beyond June 23 also petitioner is ready to give services at rupees 25 or at a Yes. lower rate than rupees 65. हाँ Shri Gulati gives an undertaking to give services at the rate of rupees 25 for an extended per quintal Yes. for an extended period of 1 year also. उसी में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट हाँ. सेम रेट पे एक्सटेंड करेंगे Therefore, उसी में लिखा है when contract is extendable for a further period of 1 year on the same rates Yes. as per the terms and conditions of the contract, then there appears to be no justification in playing with the taxpayers' money by giving benefit to certain persons who will not come through open competition at a much higher rate of rupees 65 per quintal. That will be rupees 650 per metric ton. Okay, let reply be filed. Till then, this scheme shall remain state.